Hi students, how are you? Okay dears, this is RANA SIR. Welcome to our RANA SIR educational channel. Today I will talk on a topic whose name is equilibrium of concurrent forces. On this topic I will explain in details. Okay, so you concentrate on this live video from starting to end to develop your knowledge on this topic. Simultaneously you also subscribe, yeah, like and subscribe this educational channel more and more with your colleagues, friends and students so that they can also improve their knowledge on this topic. And one additional information I am also going to say you to follow it positively. First of all, you have to take one notebook and one pen, and then you have to sit at your location properly, positively and safely. Now this video I am going to start positively and you concentrate here. First of all, I will explain this information in English, so students who are reading in English medium, that is in CBSE board, those students can understand its concept in detail, and then I will translate all the information into Hindi. So students who are reading in Hindi medium, or that is
student who are reading in UP board, those students can understand this concept easily. Okay, now I am going to start it and you follow it positively. Due to electricity problem, I have late here. Okay, so now I have also started this video and you concentrate here. Okay, so here I have written this is the class 11 physics whose and that is I will explain this concept in English and also in Hindi. So here it is also based on NCERT pattern I have already written here. Now the topic name is equilibrium of concurrent forces. It means that संगामी बलों का संतुलन. Okay, in this topic I will explain this topic in detail so that students who are reading in English medium, that is in CBSE board, those students can understand this concept easily. Okay, now next topic I will also explain after it, but all the information I will also translate in Hindi so students who are reading in Hindi medium, those students can understand its concept easily. So the topic name is equilibrium of concurrent forces. It means that संगामी बलों का संतुलन. Here I will say if a body which is feeling more than two forces and all forces are pointing at a same point. So in this case I will say that is the concept of concurrent force. That is the concept of concurrent force, but with the help of all these forces, the object, that is body, will not move from one place to another place. So I will say that body is available in equilibrium position. Okay, so in the case of equilibrium position, I will say the sum of all forces will be 0, but magnitude of the forces I will say that magnitude will be the sum of all forces, that is F is equal to the sum of all forces will be the magnitude with on the object, and those forces are available on the same object. Okay, so this concept I will write in English and then I will translate in Hindi. Now I am going to say this concept in Hindi. यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी वस्तु है, अगर उस वस्तु को दो या दो से अधिक फोर्स जो होता है कार्य करता है, लेकिन वो फोर्स सभी फोर्स का जो परिणामी बल होता है, सभी फोर्स जो होता है एक सिंगल पॉइंट पर जो होता है टेंड करता है, तो ऐसे कंडीशन को जो होता है हम कंकर्रेंट फोर्स कहते हैं. कंकर्रेंट फोर्स का मतलब संगामी बल करेंगे. तो अगर किसी भी वस्तु पर एक से ज़्यादा फोर्स काम कर रहा है और वो सभी फोर्स का डायरेक्शन जो होता है सिर्फ एक पॉइंट पर इंडिकेट करता है, तो ऐसे बलों को जो होता है संगामी बल करते हैं. दैट इज कंकर्रेंट फोर्स करते हैं. ऐसे बलों को संगामी बल के इसको इंग्लिश में कंकर्रेंट फोर्स कहेंगे. ओके, लेकिन अब कहा गया सब कंकर्रेंट फोर्स अगर किसी एक पॉइंट पर लग रहा है तो उस फोर्स के लगने के साथ साथ अगर उस ऑब्जेक्ट या उस वस्तु का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो हम कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर स्थित है. इसका मीनिंग यह होता है कि वह ऑब्जेक्ट होता है, वह वस्तु जो होता है संतुलन में है. इसलिए ऐसी कंडीशन होता है तो उस वस्तु पर जितने भी फोर्स होते हैं उन सभी फोर्स का सम जो होता है 0 के बराबर होता है. इसलिए कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स कंकर्रेंट फोर्सेस. Equilibrium of concurrent forces. It means that I will explain this concept in diagram so each and every student can understand this concept clearly. Suppose that here I will say one object I will take like this. This is the object. Here I will say this is the object. On this object, if one force is applying here, this force name is F1 and another force I am saying here F2, and other force that is also available F3. Now other force I will say one force is also applied on the same object whose name is F4. So if force
will be congruent. In this case, I will say the magnitude of all force will be as F is equal to force F1 plus F2 plus force F3 and plus 4 F4. It means that this is the magnitude of the force. So F is also known as magnitude of the forces F1, F2 and F3, F4. So this is the magnitude of forces F1, F2, F3 and F4. So all four force has been applied on the object, and this object has a magnitude force. That force magnitude force will be equal to F is equal to F1 plus F2 plus F3 plus F4. So if this object will not move from this point to another point due to the sum of these forces, means F1, F2 plus F3, F3, it means that I will say the magnitude will be 0. In the place of F, I have to write this F1 plus F2 plus F3 plus F4, which is equal to 0. In other words, we can say that F1 plus F2 plus F3, force F3, which is equal to F4 will go in right hand side, so it is having sign, and left hand side plus, so it will go in right side, so it will have minus sign. So I can write F4. This is the required concept of equilibrium of congruent forces. I will say this is the condition of equilibrium of congruent forces. Equilibrium of congruent forces. Congruent forces. RENT, congruent forces. Okay, so I have to write this concept according to this way. So this is the concept of equilibrium of congruent forces. Equilibrium is that is available in संतुलन. ओके, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु, ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है वस्तु, अगर किसी भी वस्तु पर दो या दो से अधिक फोर्स काम करते हैं, बल काम करते हैं, और उन सभी बल किसी एक फिक्स पॉइंट पर जो होता है, एक फिक्स पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, एक फिक्स पॉइंट पर जो होता है सभी बल जो होता है काम करते हैं, तो इस केस में कहते हैं कि वह उस वस्तु पर जितने भी फोर्स हैं वो सभी फोर्स जो होते हैं क्या कहेंगे, कंग्रुएंट फोर्स कहेंगे। इसका मीनिंग होता है संगामी बल कहेंगे, वो सभी बल क्या है, संगामी बल हैं। लेकिन इन फोर्स के कारण अगर यह ऑब्जेक्ट का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, इसका मीनिंग यह होता है वो ऑब्जेक्ट जो होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में। जब वह ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, श्याम अवस्था में होता है, इसका मीनिंग यह होता है कि सभी फोर्स का समेशन क्या होगा, 0। सभी फोर्स का सम जो होता है 0 होगा। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में हम 3 फोर्स को रखे हैं, राइट हैंड साइड में 1 फोर्स को रखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वो फोर्स पॉजिटिव था, एक राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका साइन जो होता है चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट in clear. Okay, now I will write also its definition, and after writing its definition I will draw the same diagram for remembering it. Okay, so this is the required concept of equilibrium of congruent forces. If more than two forces which are acting on a same object, and that object all forces are pointing on a single point, so I will say such type of force is called congruent force. And if due to these forces that object is not moving from one point to another point, so I will say that is called, that object is available in the form of equilibrium, that is equilibrium of congruent forces. Okay, so all these information I will write in English, and then so students who are reading in English medium or in CBSE board, those students can understand this concept easily. Okay student, now
This information I will erase, and after erasing I will write its proper definition so that each and every student who are reading in CBSE board or UP board, those students can understand it, and after understanding I will also translate in Hindi so students who are reading in Hindi medium, those students can also understand this concept in detail. Okay, what is the concept of equilibrium of congruent forces? It means that if any object which is available on that object, more than two forces are acting, and due to forces, all forces are pointing on a single point. So that's such type of phenomena. I will say such type of phenomena, I will say that will be in a congruent force. But if due to these forces, if object will not move from a point to another point, so I will say that object is available in the form of equilibrium. So I will say such type of phenomena is called, that is the congruent of, equilibrium of congruent forces. Okay student, so properly I will write, and after writing I will again define in Hindi. Okay, so student who are reading in Hindi, those students can understand this concept in detail. Okay, if you are understanding very well, so you like this slide video, and also you share this slide video with your colleagues and students so that they can also improve, that is update their knowledge on this topic. Okay, firstly I am going to erase it, and after erasing I will write its definition properly. Okay, so here I am going to erase this topic. Firstly I am erasing it, and after erasing again I will write its proper definition, and then I draw its diagram so each and every student can know the concept of equilibrium of congruent forces, that is संगामी बलों का संतुलन. What is the its concept? I am going to write here in detail. Okay, so first of all here I am going to write, if more than two objects, more than two forces are acting on a single object. And all forces are pointing, on a single point, on a single point. Such type of force is called, such type of forces are called, such type of forces are called, they are known as concurrent forces. And if the same object, which is not moving, which is not moving from one point to another,
such forces are called such type of phenomena such type of phenomena is called equilibrium of concurrent forces. Concurrent forces. Okay, student, I have explained here its concept in detail. If a object which is available and more than two objects which are acting on a point on the object and all forces are pointing to a single point, so such type of phenomena is called that is the concurrent forces. But if that object is not moving from one point to another point, such type of event is called that is the equilibrium of concurrent forces. So here I have written. Now I am going to give this example. So suppose that one object I have taken here like this. Now this is the object I have taken here. So here I am going to write object to be ABC. Now one force is applied from here. This force will be F2, and other force I am taking here F2, and other force I am taking here F3, and other force I am taking here F. Now F. So there are four forces are applying on the same object and all forces are pointing on a single point. So I will say such type of phenomena is called concurrent forces on a single object. Okay. Now if due to these forces if object is not moving from one point to another point, that is that object is in equilibrium position. Therefore such event, this type of event I will call that will be as equilibrium of concurrent forces. Okay, student. So I will say its magnitude force will be as magnitude force. Magnitude force I will say that is F, and F is equal to force F1 plus F2 plus F3, and then I will write here force F2. Okay, so this is the magnitude force. So sum of all forces I will say that will be the magnitude force, and that force F is equal to this force. Now if that force will be in the equilibrium position, so I will say the magnitude of that force will be 0. It means that force will be 0. It means that in the place of F I can write F plus F plus F plus F that is equal to 0. According to the information, according to the equilibrium position. Equilibrium position. According to equilibrium position, I will say force F1 plus F2 plus F3 plus F4, force F4, which will be equal to 0. This is the concept of equilibrium of concurrent forces. Okay, student, I hope that you are understanding very good way. Therefore you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends and students, so that they can also improve that is object and develop their knowledge on this point. Point name is equilibrium of concurrent forces. In other words, we can say that in English that is the संगामी बलों का संतुलन. तो यहाँ पर संगामी बल F1, F2, F3 और F4 एक ऑब्जेक्ट का मिनिमम तक वस्तु, एक वस्तु को जो तक इसको लिखेंगे एक वस्तु पर इसको हम वस्तु के नाम से लिखेंगे. इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं वस्तु.
तो इस वस्तु पर जो होता है 4 फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स F1, दूसरा फोर्स F2, तीसरा फोर्स F3 और चौथा फोर्स F4। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स की बातचीत करेंगे तो इस पर कितने फोर्सेस, चारों फोर्स का सम को हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। लेकिन हम कहेंगे कि यह ऑब्जेक्ट जो है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव नहीं करता। इसके मीनिंग ये होता है कि यह वस्तु या ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब सम अवस्था में है। जब सम अवस्था में होता है तो इस केस में हम कहेंगे कि सभी बल का सम जो होता है वो जीरो होगा, इसलिए हम सभी बल का सम कहते हैं जीरो का। तो इस कंडीशन जब इस कंडीशन किसी ऑब्जेक्ट पर यह कंडीशन अप्लाई होता है, इसका मीनिंग यह होता है कि वह जो होता है बलों का संगामी बलों का संतुलन है। मतलब जितने भी बल हैं उस बलों को जो ऑब्जेक्ट को अप्लाई किए हैं तो वह बल जो होता है उस बल की वजह से वो ऑब्जेक्ट या वस्तु का संतुलन है। इसीलिए इसको कंबाइन करके करते हैं मीडियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट मैं समझता हूँ कि आप इस सोल्यूशन को या इस डिफिनेशन को आप इजीली समझ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज इस पॉइंट को अपडेट और डेवलप हो सके। अगर कोई भी पॉइंट को क्वेरी है इस टॉपिक में, जिस पॉइंट पर अगर क्वेरी है तो पॉजिटिवली जो होता है उस क्वेरी को जो होता है कमेंट सेक्शन में टाइप करें और सेंड करें। पॉजिटिवली जो होता है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और एक ये सोल्यूशन को हम पॉजिटिवली प्रोवाइड करेंगे। नाउ इसको एक्सप्लेन करने के बाद से ऑलरेडी जो है इस इंफॉर्मेशन को हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट किए, ताकि स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं और स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं उनको डिटेल में इसके बारे में नॉलेज हो जाए। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर 2 या 2 से अधिक फोर्स काम कर रहे हैं, लेकिन सभी फोर्स जो होता है एक सिंगल पॉइंट को जोड़ता है। एक सिंगल पॉइंट को जोड़ता है, सपोज कि एक सिंगल पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट को पॉइंट कर रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट को जो होता है वो पॉइंट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं वो बल का जो होता है वो बल जो होता है कंकरेंट बल है, मीन्स उसको कहेंगे संगामी बल है। उसको कहेंगे जितने भी बल हैं इसके 4 बल को एक्सप्लेन किया गया। पहला बल F1, दूसरा F2, तीसरा F3 और चौथा F4। एक सभी बल को हम क्या कहेंगे संगामी बल कहेंगे। लेकिन इन संगामी बल की वजह से अगर इस वस्तु का जो होता है डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट के मीनिंग होता है विस्थापन नहीं होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है, तो ऐसे सिचुएशन ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। जितने भी संगामी बल हैं उस बलों का संतुलन होता है, ताकि उस बल की वजह से जो होता है वो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं होता है। इसलिए उसके लिए कंडीशन होता है कि जब हम बल का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सभी बल का समेशन मिलेंगे। लेकिन हमको अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन को एक्सप्लेन करना है तो हम कहेंगे कि वो सभी बल की वजह से उसमें जो होता है किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इसलिए उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है जीरो होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस का मीनिंग ये होता है फोर्स F1 प्लस फोर्स F2 प्लस फोर्स F3 प्लस फोर्स F2 बराबर जीरो। इसका मीनिंग यह होता है कि उस ऑब्जेक्ट या उस वस्तु का डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो सच टाइप ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। ओके, संगामी बलों का संतुलन। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग clearly. Okay, therefore you like this live video and also you share this live video with your colleagues and students so that you can develop and update your knowledge on this point. After it, I will also explain about the concept of Lamy theorems, that is Lamy की प्रमेय। लामी की प्रमेय क्या होता है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। लामी थ्योरम जो होता है, लामी की प्रमेय को इंग्लिश में लामी थ्योरम होता है, उस कंसेप्ट को भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि किसी एक वस्तु को जो होता है 3 फोर्स एक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा लामी थ्योरम के अनुसार। ओके, लामी थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद से इन कंसेप्ट को जो होता है न्यूमेरिकल के थ्रू जो होता है हाउ वी विल अप्लाई ऑल दिस कंसेप्ट इन न्यूमेरिकल्स। सो आई विल आल्सो टेक सम न्यूमेरिकल्स एंड देन आई विल give its appropriate solution. Okay, student, by using this concept, one concept is the concept of equilibrium of
concurrent forces and also the concept of learning theories. Okay, student. So I hope that you are understanding clearly. Okay. Always I will meet on the same time, that is 30 minutes past to 7 o'clock to 30 minutes past to 8 o'clock. Okay. During this time interval, I will teach you physics class 11 physics. Okay, student. Thank you for watching this live video. I